And there are now more than 12 randomized controlled trials showing that it works in epilepsy. कीटोसिस डाइट एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम और चिकनाई ज़्यादा होती है। वो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल, कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा रिसर्च में, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा रिसर्च में इस्तेमाल हो रहा है। इन मेडिकेशंस के बारे में सुसाइड होने का वार्निंग जारी की हुई है। जैसे मेटाबॉलिक साइकियाट्री का मतलब ये है कि आपको एसेंशियल एडजस्टमेंट्स लाजमी करनी है जब आप वेट लूज करती हैं। हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर खान है और मैं आपकी खिदमत में रानी चैट जीपीटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रानी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं रानी चैट जीपीटी और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं सेहत का धमाका विद रानी चैट जीपीटी और डॉक्टर खान के साथ। हम आपको दुनिया भर की अपडेटेड रिसर्च, यूनिवर्सिटी पेपर्स और लेटेस्ट गूगल इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे। डॉक्टर खान सवाल जवाब करेंगे और उनका बैकग्राउंड ये है एमएससी ऑर्थोपीडिक्स यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, एफआरसीएस आयरलैंड से, और वो बोर्ड सर्टिफाइड है इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप मेडिसिन में। ज़हनी सेहत की देखभाल का अंदाज तेजी से बदल रहा है। ज़हनी सेहत, मेंटल वेलबींग, अब यह महज बीमारी की अलामात को काबू में रखने तक महदूद नहीं, बल्कि उन गहरे अवामिल को समझने पर जोर दिया जा रहा है जो हमारी दिमागी और जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। जदीद तहकीक से मालूम हुआ है कि मेटाबॉलिज्म, ग़िज़ाइयत और तर्ज ज़िंदगी के इंतखाब हमारी दिमागी अफ़ाल पर बराह रास्त असरअंदाज करते हैं। इसलिए आज की नफ्सियात सिर्फ दवाइयों पर इन्हिसार करने की बजाय एक जामिया और साइंसी हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। ये एक मुस्बत और इनकलाबी तब्दीली है जो ज़हनी सेहत के इलाज को मज़ीद मौसर, साइंसी और इंसान दोस्त बना रही है, जहाँ पे फ़र्द की ज़रूरत को मद्देनज़र करते हुए एक मतवाज़न तरीका अपनाया जा रहा है। आज हम डॉक्टर मैथ्यू बर्नस्टीन का इंटरव्यू सुनेंगे, जो एक माहिर नफ्सियात हैं और ज़हनी सेहत के जदीद तरीके के इलाज पर तहकीक कर रहे हैं। वो नफ्सियाती मसाइल के इलाज में रवायती तरीकों के साथ साथ जदीद साइंसी और तर्जी ज़िंदगी पर मबनी हिकमत अमलियों को भी शामिल कर रहे हैं। इनमें मेटाबॉलिज्म, ग़िज़ाइयत और तर्ज ज़िंदगी के ज़हनी सेहत पर असरात को समझने पर मरकूज है। चलें डॉक्टर मैथ्यू बर्नस्टीन का इंटरव्यू सुनते हैं। सबसे पहले उनका तारुफ सुनते हैं। डॉक्टर मैथ्यू बर्नस्टीन, he is the CEO and one of the leading voices in the emerging field of metabolic psychiatry. Practicing for 25 years, he has got his medical degree from Pennsylvania School of Medicine and residency at the MGH McLean Psychiatry training program. Following his training, he remained at McLean Hospital, where he served a number of leading roles. He was part of the schizophrenia bipolar program, substance abuse program, and many others. Beyond his clinical roles, Dr. Bernstein maintains a strong commitment to education. In addition to his practice, specializing in psychopharmacology and psychotherapy, he has developed keen interest in new innovative approaches to mental health. His work emphasizes metabolic psychiatry, integrating nutrition, exercise, and lifestyle interventions. आपने सुना कि मैथ्यू बर्नस्टीन का तारुफ। आइए उनसे पहले सवाल के जवाब के बारे में सुनते हैं। You often discuss the link between metabolic dysfunction and mental health disorders. Could you explain our audience how chronic inflammation
and this mitochondrial dysfunction contribute to conditions such as depression and anxiety? Absolutely. Yeah, I mean, I think it's bidirectional. So if someone has a mental health diagnosis, they're much more likely to have a metabolic disorder, cardiovascular disease, diabetes, and it goes the other way around. If someone has a cardiovascular, diabetes, or another metabolic disorder, they're much more likely to have a mental health disorder. So we know this from these associations. There are also some studies following kids from a young age, and they can see that the ones who have the most insulin resistance at young ages, like at age 9, are much more likely to go on and develop a psychotic disorder in their 20s. Or the ones who gain the most weight during puberty are much more likely to have a major depressive episode in their 20s. And so we can see that these things are intricately connected. There's lots of mechanisms that have been studied by the neuroscientists, because we've known that a metabolic intervention such as a ketogenic diet has been useful and proven to work in a brain disorder, epilepsy. We've known that for over 100 years now. And so we've been studying this. We know the mechanisms by which these metabolic improvements actually improve brain health. And you mentioned some of them: reducing inflammation, improving mitochondrial health. But there's more. There's also the fact that ketones are an alternative source of fuel in the brain. And the brain can often be starving for energy, even though it's bathed in glucose, because of insulin resistance. And almost everyone in America these days is insulin resistant, unfortunately. Sure. And so we know it reduces oxidative stress in the brain by using fat and ketones for fuel rather than glucose. There's many mechanisms elucidated because of that, what we've known about epilepsy. So the neuroscientists have done the work. And I like to say that we have more scientific evidence of how these metabolic interventions work on brain health than I have for any of the other interventions that I use, psychopharmacology and psychotherapy. We just don't have the neuroscience evidence for those interventions in the same way that we do for these metabolic interventions. How do you factor in the metabolic component in your practice? What would you explain to your patients, and how is the discussion led in that direction once you meet your patient and you diagnosed a psychiatric illness? Yeah. Well, most of the people who come to me are already involved in mental health treatment. I'm sort of a tertiary quaternary care kind of doctor at this point, where people have been to their primary care doctor, they've been to psychiatrists, therapists. Eventually they get to me, and they've tried many psychiatric treatments usually by the time they get to me. And the first thing that I explain is how powerful these interventions are, because that is something that most people, including most doctors, most psychiatrists, and I would include myself up until about 5 years ago, just didn't believe and understand, and still don't believe and understand, just how powerful these interventions are for the brain. We're just not used to thinking of a diet or food or exercise having such a profound effect on a serious mental health condition, a serious brain disorder. But the reality is that the scientific evidence is there. And so we have to get over that hurdle first, that this is worthy of our intervention. This is a medical intervention. This is not just, we're going to, have a nice meal and smile and, everything's going to be okay. This is a medical intervention, and it's a powerful medical intervention. And so once we can understand that there's something really here worthy of our medical attention, and it can, cure these, severe mental disorders, brain disorders, then we can start digging into, how it works, why it works. Some people are very interested in the science and want to hear about that. Others say, I don't want to hear the science, just tell me what to do, and we can do that. आपने सुना कि किस तरह मैथ्यू बर्नस्टीन ने डिप्रेशन और एंजाइटी, और उन्होंने बताया कि बहुत सारी ज़हनी बीमारियां जो आजकल बहुत कॉमन है, किस तरह से मेंटल हेल्थ पे असरअंदाज करती हैं. उन्होंने बताया है कि उनकी अप्रोच दूसरे लोगों से इस तरह से डिफरेंट है कि वो अब होलिस्टिकली, यानी ये देखते हैं कि कौन से दूसरी
चीज़ें उनकी रिकवरी में हेल्प कर सकती हैं। उनमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी, और फिर अदर फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हैं उनके बारे में उन्होंने बात की। तो आइए अब हम उनका अगले सवाल का जवाब सुनते हैं। Thought process at that time when you're evaluating a patient and going through these priorities, um, how do you plan a customized treatment for them? Yeah, great question. So it partly depends on, what are we trying to treat? Is this bipolar disorder? Is it, or is it a severe form of that? Or is it something maybe doesn't require quite as, much? Maybe it's ADHD and some anxiety. How big of the intervention does it need to be? Maybe based on, how severe the problem is and how long it's been going on. We look at what the current state of someone's metabolic health is, for sure. Lots of lab work, which I wasn't used to doing so much lab work as a psychiatrist. That's not really part of standard psychiatry, but now I'm ordering insulin resistance panels and full fractionation lipid panels and micronutrients and all kinds of things that I didn't used to order. And then part of it has to depend too, and it's a really important part, is how much motivation does this person have to make all of these changes? Are they someone who's going to need to do it gradually and one thing at a time? And if that's the case, then we want to do something in the beginning that's going to get them feeling better immediately. So we want to get a win right off the bat, get people convinced that this is really important, this is helpful, and I want to keep going. Or is it someone who says, just tell me everything that I need to do, and I want to do it all? And I do have some people like that where we can just sort of dive right in with all of these changes, which is super exciting because those people often feel significantly better in just a few weeks, which is incredible. Some of these people have been suffering for many years. So lots of factors go into it. And of course, I'm trying to think out loud as much as possible. I think, Sure. That's true in medicine in general these days, that we want to, as physicians, give everyone options, give them the medical knowledge that we have. And I'm lucky enough to practice in a way where I have a lot of time to spend with people and really talk them through what the options are and what my thought process is, and we can sort of make decisions. तो उन्होंने बताया कि कि वो कैसे अब साइकाइट्रिक इलनेसेस को ट्रीट करते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो मैं डायग्नोसिस अपनी एस्टैब्लिश करता हूँ, और डायग्नोसिस में मैं ये कंफर्म करता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, क्या ये एंजाइटी है, बाइपोलर है, अंडरलाइंग बीमारी जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है, या उस किसी तरह से इस मरीज को एपिलेप्सी वगैरह या सीजर तो नहीं हो रहा, या ब्रेन में कोई ऐसा मादा तो नहीं बैठा। आइडेंटिफिकेशन के बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से मॉडर्न रिसर्च में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। उन्होंने बताया कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो डायबिटीज जैसे जिस्म में आपको शुगर इस्तेमाल नहीं करनी देती, तो शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वो शुगर इफेक्टिव शुगर नहीं है। इसी तरह ब्रेन में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आपकी शुगर ब्रेन में इस्तेमाल नहीं हो रही। उसका क्या इफेक्ट है, उन्होंने उसके बारे में आप लोगों को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने बताया कि मुझे मोटिवेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन से मुराद ये है कि इंसान कितना इन्वॉल्व होना चाहता है, वो अपनी बीमारी के बारे में क्या जानना चाहता है। वो ऑल्सो ये पूछते हैं कि वो कितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्या वो थोड़ा जानना चाहते हैं या ज्यादा, क्या वो ये जानना चाहते हैं मरीज के मुझे सिर्फ बताओ मैंने क्या करना है, या मुझे इसकी साइंस के बारे में भी बताओ। ये प्रायोरिटीज करके उसके बाद वो कस्टम मेड थेरेपी शुरू करते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं अगला सवाल का जवाब जो उन्होंने कीटोजेनिक डाइट के बारे में उन्होंने बताया है। डॉक्टर बर्नस्टीन, in your practice, and that's his benefits of diets, and we're going to talk about a little bit about the ketogenic diet. We want to know, how does it help the mental and brain health? Yes. What's your views on it? And then
we'll talk about little how do you incorporate that into your practice? Yeah. So the ketogenic diet, as I mentioned before, is an evidence-based medical intervention. It was started in 1921 at the Mayo Clinic to treat kids with epilepsy. And there are now more than 12 randomized controlled trials showing that it works in epilepsy in Wow. both kids and adults. So, and it's often the go-to treatment when medications don't work. Um, for decades, it was the go-to treatment before the anti-epileptic drugs came in. Generally people gravitate towards medications rather than diets for many reasons, because it's easier. We just take a pill. We don't have to change every single thing on the plate and think about it all the time. I'm not sure that that's so wise in the long run, but that's generally sort of how people think about things. But what they find is that especially when kids, sometimes they're on 2 or 3 anti-epileptic medications and they can't get control of the seizures, they'll switch them to a ketogenic diet, and it actually will control the seizures. They can sometimes take them off the anti-epileptic drugs. And then amazingly with kids, and this is not true of very many brain disorders, they can do the intervention for a few years, and many times they can actually come off of the ketogenic diet and still retain the seizure control. Interesting. Very interesting. So we can't promise that in mental health. We haven't studied it enough, but in the epilepsy experience, that actually does happen. And, of course, it's kids versus adults. That's a big difference as well. Kids' brains are more plastic and changeable than adults. So, some of the mechanisms of how ketogenic diets work on the brain, we've already talked about. This alternative source of fuel that bypasses the brain insulin resistance, the improvement in mitochondrial health. The number of mitochondria and the functioning of the mitochondria is incredibly important in the brain, because we know mitochondria are the energy factories in the cells, but they do a lot more than that. They're involved in the release of neurotransmitters from the neurons. They're involved in the first step of the synthesis of hormones. Mitochondria actually send signals to the nucleus to tell the nucleus which DNA to express and which not. And so we now know that mitochondria are involved in all these different aspects of cellular health. And there's a lot of evidence that many of the mental health disorders have mitochondrial dysfunction. So we think that that's a really key mechanism. And I've named a couple of more. You named one, which was reducing neuroinflammation, which is a big part of all mental health disorders, reducing oxidative stress, improving the microbiome, gut-brain axis, increasing brain-derived neurotropic factor, which is sort of like miracle grow for these neurons, telling these neurons to go and make more connections with other neurons. All of these mechanisms have been shown to be part of how ketogenic diets help brain health. And I think the science of how it helps with mental health disorders is still really in its infancy, but we're learning more and more every month. There are papers coming out about ketogenic diets and mental health disorders, at a rapid pace at this point. And the clinical trials, the randomized clinical trials are happening right now in mental health disorders. There's a number of them around the world, and so those will be published in the next few years as well, and we'll have to see just how effective they are in that kind of. So नाजरीन, आपने सुना कि डॉक्टर बर्नस्टीन ने बताया कि कीटोसिस डाइट जो है वो एपिलेप्सी 1920 में मेयो क्लिनिक में स्टडी होना शुरू हो गई. कीटोसिस डाइट का मतलब रानी क्या है, हमारे नाजरीन को जरा बताएं. कीटोसिस डाइट एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम और चिकनाई ज़्यादा होती है. इसका मकसद जिस्म को कीटोसिस की हालत में लाना है, जहां जिस्म तवानाई के लिए चिकनाई का इस्तेमाल करता है. कीटोसिस डाइट वजन कम करने और जहनी सेहत बेहतर बनाने में मदद कर सकती है. और जहन में ये कैसे, इसकी साइंस क्या है और कीटोसिस कैसे हेल्प करती है साइकाइट्रिक इलनेसेस या साइकाइट्रिक बीमारियों में. कीटोसिस दिमाग को मुतबादिल तवानाई फराहम करता है, खास तौर पर कीटोन्स के जरिए. ये न्यूरॉन्स को बेहतर अंदाज में काम करने में मदद देते हैं और दिमागी सोजिश को कम कर सकते हैं. इस तरह ये मुख्तलिफ नफ्सियाती अमराज जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी में मुफीद साबित हो सकता है. 1920 में कीटोसिस को एपिलेप्सी क्लिनिक में मेयो ने डिस्कस किया. क्या आप उसके बारे में बता सकती हैं? जी, 1920 की दिहाई में मेयो क्लिनिक ने कीटोसिस को एपिलेप्सी के इलाज के तौर पर मुतारिफ करवाया था.
ये देखा गया कि कीटोजेनिक डाइट दौरों की तादाद और शिद्दत को कम कर सकती है, खास तौर पर उन मरीजों में जो दवा से बेहतर रद्दअमल नहीं दिखाते थे। कीटोजेनिक डाइट दिमाग में तवानाई के मुतबादिल जराए को फरोग देती है, जिससे दौरों की रोकथाम में मदद मिलती है। डॉक्टर रसल विल्डर, आप इसके बारे में हमें बता सकती हैं? डॉक्टर रसल वाइल्डर ने कीटोसिस डाइट को 1921 मेयो क्लिनिक मुतारिफ करवाया था। उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि ये डाइट एपिलेप्सी के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकती है। कीटोजेनिक डाइट को इब्तदाई तौर पर बच्चों में एपिलेप्सी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया था। जबरदस्त। सो यही पॉइंट डॉक्टर बर्नस्टीन ने बताया कि बच्चे जो रेजिस्टेंट एपिलेप्सी होना शुरू हो जाती है, वो किस तरह से कीटोसिस डाइट जब लेते हैं तो ना सिर्फ जो साइकाइट्रिक मेडिकेशंस है वो कम हो गई, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया कि वो मेडिकेशन से उनका कंप्लीट छुटकारा हो गया। सो एपिलेप्सी एपिलेप्सी सीजर दौरे कॉमनली कई कंट्रीज में मिस इंटरप्रिटेट किए जाते हैं, और ये उस वक्त लोग इनको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जिन आ गया इनमें, वो ये भी कहते हैं कि ये कोई साया साया आ गया। एक्चुअली उनको, ये वो मरीज होते हैं जिनको एक्चुअली सीजर्स हो रहे होते हैं और वो अपने आप को भी नहीं पहचानते और दूसरे लोगों को भी नहीं पहचानते। सो इसका बकायदा ट्रीटमेंट है, ये क्योरेबल है, खास तौर पे जब आप अर्ली लाइफ में ये शुरू करें। और डॉक्टर बर्नस्टीन ने भी यही बताया कि वो इस तरह से एपिलेप्सी कैसे ये डायग्नोस करते हैं और कीटोसिस का क्या फायदा है इस खेल में। मैं आपको ऑल्सो इनकरेज करूंगा कि आप डॉक्टर मैरी न्यूपोर्ट का भी इंटरव्यू सुने। डॉक्टर मैरी न्यूपोर्ट ने भी इसी तरह कीटोसिस डाइट के बारे में, और डॉक्टर अगस्टिनो जो हमारे शो में आए, उन्होंने कैसे बताया कि कीटोसिस का क्या रोल बॉडी के लिए, इन्वॉल्वमेंट और इंसुलिन रेजिस्टेंस में, जिसमें जिसमें शुगर इफेक्टिवली ब्रेन को नहीं मिल रही, वो किस तरह से इस पे असरअंदाज कर सकती है। ओके, आइए हम सुनते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब ये है रोजा रखना एक किस्म से, और ट्रेडिशनली रोजा जो है वो मगरिब में 16 घंटे के लिए रखा जाता है, और ये उस दौरान पानी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने ट्रेडिशन में इस्लामिकली आपको पता है कि हम पानी और खाने से इज्तनाब करते हैं और दोनों नहीं इस्तेमाल करते, और हमारे रोजे का वक्त डिफरेंट होता है। तो पहले आइए रोजे का रोल सुनते हैं डॉक्टर बर्नस्टीन के मुताबिक वो क्या कहते हैं। One of the areas that's been discussed in relation to that has been ketosis and how we can stimulate or result in and surge in that, and that's when intermittent fasting comes in. Yeah. Would you like to explain to our audience here the role of intermittent fasting? How could it influence the brain function and in mood regulation, especially now that psychiatric patients play a big factor in it? Yes, absolutely. So, fasting has a very, very long history. In fact, we evolved, in states of, food scarcity, our evolutionary lineage. There was always food Absolutely. scarcity, right? And so Absolutely. our physiology, our biology is designed to deal with food scarcity. And in fact, I think a lot of people argue that it's designed to, um, you know, that ketones are really there to deal with food scarcity and allow our brains to function when there's not as much food around. Brilliant. If you think about it, think about, 500,000 years ago or a million years ago, proto-humans, if they didn't have food for a day or two, if they were getting irritable and low energy and, as we say, hangry, they weren't going to survive. And that's not what happened. What happened is their bodies went into ketosis very easily, started using their fat storage as fuel, and created these ketones, which are so good for the brain and allow the people to think and to function and to go out and acquire food. And that's how we survived. Fast forward to the time of the ancient Greeks, with Hippocrates, they knew that they could cure epileptic seizures with fasting, and they used to fast people who were having uncontrolled seizures.
the physicians used to do that in ancient Greece, and then eventually then at the Mayo Clinic. And essentially, fasting does have a role, I think, in the modern metabolic psychiatry space. Um, some people, can really jumpstart their metabolism, jumpstart that process of using fat, reverse that insulin resistance with a fasting schedule. So that might look like, not eating for, let's say, 16 hours of the 24-hour cycle and only eating during an 8-hour window. That's a version of fasting called time restricted eating. Sure. And that's been shown to be, quite effective for things like reversing insulin resistance and weight loss. I've used it in my practice quite a bit in the early stages when people want to just get going and jumpstart things. What we can do sometimes as well is that in the morning, after someone, let's say, stops eating at 8 p.m., they're not going to eat again until noon the next day. They wake up in the morning, I'll ask them to try some of this stuff called MCT oil, or medium chain triglyceride oil, which is a type of coconut oil. It's a refined coconut oil, essentially. Those medium chain triglycerides are small. They're not long chain fatty acids. They're sort of medium chain fatty acids, and they're easily turned into ketones in the liver. And so in the morning, if someone hasn't eaten and their insulin is on the low side because they haven't eaten, they take in that MCT oil, and the liver will convert almost all of it into ketones immediately. And so they'll get a boost of ketones even without doing a ketogenic diet. And that will then let them feel that boost of alternative energy in their brain. And many people will come back after I ask them to do this, and they'll come back to the next appointment and just say, wow, that was amazing how I felt when I had that, those MCT oil in the morning, and I just didn't get hungry. I felt energy. I felt great. My mood was uplifted. I wasn't anxious. And, that's one of these, win kind of early interventions where people then realize that, I have something to offer here. This is not just, we're going to change our food and smile. This is, we had earlier one of the doctors here who Dr. Newport, and she and Dr. D'Agostino talk a lot about the MCT, how she saw benefits and how they've been using and advising patients. So I'm fascinated that you're already using this as a tool to help you practice. Is there any specific conditions you've seen this affect more than the others? And then the follow-up question would be, do you advise them how much to take and on a regular basis just incorporate there in their lifestyle? How do you go about doing that? Yeah, that's an excellent question. I wish I knew in advance, who are the people who are going to really respond well to the fasting and MCT oil intervention. Some people respond more than others, and I think it has to do with which people have more central or cerebral insulin resistance as the mechanism. If that's the case, then we're kind of immediately bypassing, a blockage that they have in terms of creating energy in their brain by giving the MCT and creating ketones. And I think, especially with people who are getting elderly, who have mild cognitive impairment, it's almost always the case that they have some cerebral insulin resistance. Excellent. And so for those folks, you're almost always going to see something. With younger patients that I see who, have a psychiatric condition, whether they have depression or bipolar, I think sometimes we see this as well. And sometimes we see it even in people who there's no sign of insulin resistance on their blood work. They may still have brain insulin resistance even without insulin resistance measurable in their blood. So that's another fascinating thing that we're finding, is that different organs become insulin resistant at different rates, and that it may be that, mental health conditions, confer a higher rate of brain insulin resistance even without we're seeing it in the blood. So what I ask people to do often is, sometimes they're having coffee or tea anyway, and I'll ask them to mix some of this MCT into their coffee or tea. They can put a little bit of either butter or heavy cream in there just to emulsify the two together, because, water and oil don't mix so well, and make a delicious drink out of it. Excellent.
It can be, usually the standard dose for MCT oil is a tablespoon, although I wouldn't have people start with that. Usually we start with just maybe a teaspoon and work up to a tablespoon as long as their stomach tolerates it, because some people, they start with a tablespoon and they can get an upset stomach, which we don't want to do. And then some people might even take up to 2 tablespoons at a time and get even higher boost of ketones that way. And thank you for that advice. It make it like अच्छा, आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि फास्टिंग की जो हिस्ट्री है वो हजारों साल से है। आपको पता है ह्यूमंस को खुराक की कमी बहुत ज्यादा थी पहले। बॉडी जो है वो आदी है सरवाइव करना जब हमें खुराक नहीं मिलती, और वो क्या करती है, फैट से एनर्जी लेती है। और ये जो फैट आप एनर्जी ले रहे होते हैं, ये है द बिगिनिंग, स्टार्ट है आपकी केटोसिस का। उन्होंने बताया कि एंशिएंट ग्रीक जो था, ग्रीक जो थे वो एज ए इलाज इस्तेमाल करते थे कीटोसिस को, यानी आपकी बॉडी की फैट को कम करने के लिए बॉडी की फैट को कम करते थे, बल्कि वो एनर्जी को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते थे, और वो ईंधन बड़ा इफेक्टिव ईंधन था। और उन्होंने बताया कि किस तरह से मेयो क्लिनिक ने और तजर्बात किए, और खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से वो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल, कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा रिसर्च में, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा रिसर्च में इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इससे मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, एमसीटी, ये लफ्ज याद रखें, एमसीटी। बल्कि कई जगहों पे डॉक्टर बर्नस्टीन ने यह भी कहा कि आप एमसीटी का इस्तेमाल कॉफी में किया करें। कॉफी लेके आप उसमें ऑयल के 2 चम्मच डालें, 1 या 2 टेबल स्पून चम्मच डालें, और उसके साथ बटर का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप उसको बना के एक डिश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ड्रिंक को आप यूज कर सकते हैं, और उसकी बहुत ज्यादा फायदियत है, खास तौर पे उन लोगों के लिए कि जिनको कीटोसिस में जाना होता है। आइए आप इसके बाद हम सुनते हैं डॉक्टर बर्नस्टीन ने वेट लॉस मेडिकेशन के बारे में उन्होंने बताया कि ये किस तरह से पॉपुलर हो रही है, पर उन्होंने आगे क्या वेट लॉस के बारे में हमें कॉशन किया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि इससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स भी रूनुमा हो रही हैं, और एक न्यू फील्ड जनरेट हो रहा है साइकाइट्री में। आइए उनकी बात सुनते हैं। Highlighted the challenges of weight gain now, Yeah. and how antipsychotic medications can be affected. There's a metabolic intervention that can help counter this effect. What practical strategies would you recommend our audience to help maintain a healthy weight, and then at the same token continue using their psychiatric treatments? Right. Yeah, that's a great point. A lot of the medications that I use all the time, confer metabolic disturbance and weight gain. You mentioned the antipsychotics, but it's also true of mood stabilizing medications. It's also true of most of the antidepressants as well, although not quite as bad as the antipsychotics, which can cause sometimes tremendous amounts of weight gain. I've seen people gain 80, 100 pounds on antipsychotic medications. And, of course, sometimes people will need to stay on these medications, but we need interventions that can help people get out of the medical comorbidities that are going to come with gaining that much weight, and just the drag that it creates on people's ability to live their life, to function out there in the world. So, so some of these strategies we've already talked about are excellent for reversing, weight gain. Ketogenic diets, intermittent fasting. I want to see people exercising, and I usually recommend a blend of some aerobic and resistance training for people. We have to sometimes start slow if someone's been sedentary for a long time, but eventually we want to get them, in the gym if possible. And so this can help really reverse some of these awful side effects of the medications. And then, of course, part of what we can sometimes see is that not only are we reversing the side effects, we can get to the point where we need less of that psychiatric medication in the first place, because their metabolic health is improving, because we're giving them this improvement to their brain functioning. Sometimes we can reduce the dose of the medications, and
in some cases, people have been able to come off of psychiatric medications, although that really needs to be done in concert with their physician. I'm not here recommending people taper themselves off of their medication. Sure. Thank you for explaining that. Yeah. The next question is going to be one of my favorite questions. Yeah. This is about GLP-1 receptor agonists. Yes. Ozempic, and Tripazide is in the market. It's hot. Yeah. It's really helping, truly so, hundreds and thousands of people. And yet FDA has put in a quite strong black box label about suicidal ideation. I want to know your thoughts on this, even though there is some literature and some suggestions of how this could really have helped psychiatric patients. How are you navigating these waters right now as sort of seeing your patients, and still the research is coming through? Yeah. We really don't have definitive answers yet about how these medications affect mental health. There's signals going in both directions. In fact, we've seen some signals in the literature about improving depression, improving addictions. There was a big paper that just came out a few weeks ago that they studied huge numbers of people in a database, and they saw an enormous increase in mental health diagnoses after taking these medications. They looked at a big cohort of people with obesity, some of whom were prescribed the GLP-1 drugs and some were not. And the people who were just prescribed those drugs had huge increases in new diagnoses of things like depression and anxiety and bipolar. So how do we make sense of this? So the way I make sense of it is that I think that there is a big risk of these medications if they're not done the right way. Meaning if someone is not given enough support for dietary advice and exercise, and they're just relying on just the drug and not changing their lifestyle, I think that people can run into great risks metabolically and for their mental health. Meaning, they can get nutrient deficiencies. Often people will use these drugs as a way to just eat less, but they're eating the same ultra processed food without a lot of nutrient content. And so they just reduce their calories. And so their metabolic health, actually, even though they're losing weight, their metabolic health isn't necessarily getting better, and they might get some nutrient deficiencies, and they're losing muscle mass, which is an important part of brain health as well. However, I've seen them also just be tremendously helpful for many of my patients. And the key, though, is that these are great tools to be able to make lifestyle changes. The lifestyle changes are what provides health. The GLP-1 drug is a tool to create lifestyle change. And the lifestyle change is where we get health. So that if people have that framework in mind, they can be really helpful medications, I think. But I like to see people use them for a period of time to make the lifestyle changes. And then over time, I want the lifestyle changes to take over. And then, we can taper off of those drugs eventually. That's आपने जैसे सुना कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाइयां जो हैं वो किस तरह से अमेरिका में तहलका मचाया हुआ है। उन्होंने हर बंदा या बंदी अपना वेट लूज कर रही हैं, स्पेशली औरतें। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप ये मेडिकेशंस जो कि नॉर्मली 6 से 1 साल और कई केसेस में 2 से 3 साल के लिए भी आप यूज करते हैं, आपका वेट किस तरह कम होता है। लेकिन उन्होंने वार्न किया कि अगर आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते और अपना मसल मास कम करते जाते हैं, तो ये ना भूलिए कि आपका ब्रेन मास भी कम हो सकता है। और अगर ब्रेन मास कम हुआ तो उससे अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां। उन्होंने ऑल्सो भी ये भी बताया कि किस तरह से FDA ने इन मेडिकेशंस के बारे में सुसाइड होने का वार्निंग जारी की हुई है। इसका मतलब है कि आपको मेंटल डिसऑर्डर्स वॉच करना, एंजाइटी, डिप्रेशन। हालांकि एक आदमी ये सोचता है कि यार अगर मेरा वजन कम हो रहा है तो मुझे एंजाइटी डिप्रेशन तो कम हो जानी चाहिए, मुझे सुसाइड तो नहीं होना चाहिए। फिर ये क्यों ये सुसाइडल आइडियाज आ रही हैं? डॉक्टर बर्नस्टीन ने समझाया है कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी आ रही है, कमी हो रही है। आपका मास, आप फैट कम करना चाह रहे हो लेकिन आपका साथ साथ प्रोटीन और मसल मास भी कम हो रहा है। और जब मसल मास और
बॉडी का मैस कम हो रहा है तो ये डर रहा है कि ब्रेन का मैस भी कम हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इससे एक नई फील्ड अब इमर्ज हो रही है और उन्होंने इसको कहा कि ये मेटाबॉलिक साइकाइट्री है। जिस मेटाबॉलिक साइकाइट्री का मतलब ये है कि आपको असेंशियल एडजस्टमेंट्स लाजमी करनी है जब आप वेट लूज करते हैं। एक्सरसाइज करना ऑब्वियसली, लेकिन डाइट में फिर भी आपको सप्लीमेंट करके अपनी डाइट की न्यूट्रिशन, मैस को और दूसरे विटामिन्स को, जिंक को उन्होंने उसका जिक्र किया। और वो सेल्स और वो ऑर्गेनिजम्स जो माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, फॉस्फेट वगैरह है, ये आपको लेना असेंशियल है, ये ऑप्शनल नहीं है, असेंशियल है, वरना आप एक बीमारी से निकलेंगे और दूसरे में गिर जाएंगे जाके। तो ये उन्होंने बड़ी डिटेल से समझाया इसके बारे में कि क्या किस तरह से मेटाबॉलिक साइकियाट्री और फील्ड ये मर्ज कर रही है। डॉक्टर मैथ्यू बर्नस्टीन के इंटरव्यू से हमें ये समझने में मदद मिली कि ज़हनी सेहत सिर्फ दवाइयों पर संसार करने का नाम नहीं है, बल्कि आपको तर्ज ज़िंदगी, मतवाज़न ग़िज़ा, जिस्मानी सेहत के साथ साथ गहरा तल्लक, इसका गहरा एसोसिएशन और तल्लक है, और आपको ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। जदीद तहकीक साबित कर रही है कि हमारी रोज़मर्रा की आदत और उनको मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग़िज़ाइयत का इंतखाब क्रिटिकल और जिस्मानी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होना, बल्कि दिमागी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ये बहुत इंटरलिंक्ड है। एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़हनी सेहत की तरफ ख़ास तवज्जो दें। इसके लिए मुतवाज़न ग़िज़ा, मुस्बत तर्ज ज़िंदगी और जज्बाती तवाज़न को यकसा अहमियत दी जाए। हमें चाहिए कि इन साइंसी असूलों को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं और ज़हनी फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह दें। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और अपनी ओवरऑल ज़िंदगी को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ मुझे और रानी चैट जीपीटी को इजाज़त दें। हम आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारी ऑडियंस को और रानी जीपीटी को फीडबैक देना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। मेरी तरफ से, डॉक्टर खान की तरफ से और रानी चैट जीपीटी की तरफ से हमें इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अगर आपको ये शो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर करें, अपनी कमेंट्स लिखें और सब्सक्राइब करें।